how are you all? I hope you all are fine, enjoying your life. So, friends, you all know that my name is Shivani Gupta and I'm from Jaipur, Rajasthan. Today, actually, I'm not going to talk about any particular topic. I'm going to talk about which is, I would say, important for all of us to enhance not just our spoken English but also to boost up our confidence. So hey friends, I just want you to make sure that please watch this video till the end. And one more thing, if I make mistakes here and there, please do point out on those mistakes and do let me know. Then I'll correct them and I'll improve. Actually, I'll improve myself. So yeah, friends, today's topic actually it's not on just topic. It's a real discussion among all of us, and that is on what do you do on your weekends. What do you usually like doing on your weekends? How do you spend your weekend? So this is the one question. Although you may have seen that this is asked by some of the interviewers as well, and maybe even your friends have asked this so many times, like, hey, क्या कर रहे हो weekend पे, क्या चल रहा है, क्या करने का plan है इस बार Sunday और Saturday को. So आपने सब देखा होगा, लोग आप पूछते हैं जनरली कि what is your weekend plan. सो आज हम ये जानेंगे कि वीकेंड के बारे में कैसे बात कर सकते हो आप इन इंग्लिश. सो फ्रेंड्स, आई एम जस्ट मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड देन डू लेट मी नो दैट इफ यू हैव लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट और यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट. पता नहीं फ्रेंड्स, मैं वीडियो बनाए जा रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा कि लोग बाग इंजॉय कर रहे हैं वीडियोज़ या लोग लाइक कर रहे हैं वीडियोज़ को. कोई कॉमेंट्स, मतलब कम कॉमेंट्स आते हैं एक्चुअली, बिल्कुल ना के बराबर ही समझ लो. जो चलो क्या क्या मिस्टेक हो रही है फ्रेंड मेरी तरफ से, मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए. आप मुझे सपोर्ट कीजिए. एक्चुअली यू नो वी आर हियर टू इम्प्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश. और ये मत समझिए कि मैं एज अ वुड से मैं जस्ट एज अ ट्रेनर आ रही हूँ या मैं तो कुछ सीख रही हूँ. नहीं फ्रेंड्स, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू नो दैट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. नो वन विल गोना टीच यू इन जस्ट 30 days इन 60 days इन 90 days. ये होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है. इसको सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए. यू नीड रेगुलरिटी, यू नीड डिसिप्लिन. यू कैन से डिसिप्लिन इन योर लाइफ. एक्चुअली यू नीड टू बी पंक्चुअल. समझ रहे हो आप मेरी बात को. तो ये मत समझो कि मुझसे नहीं सीखोगे. आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, even there are so many YouTube channel out there who are doing the same thing, who are teaching you the same topic, and maybe by which like by their way of teaching you will gonna improve. So मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझसे ही सीखो, आप कहीं से भी सीखो. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या इस वीडियो से आपने कुछ सीखा. फर्स्ट थिंग, नहीं सीखा कोई बात नहीं, वो भी मुझे बताइए कि कुछ भी नहीं था वीडियो का, डिसलाइक कर दो, कोई सिंपल बात है. अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, यू नो फ्रेंड्स, until unless you will not gonna write anything, your mind will not start thinking in English. So अपने आपको लाइक ये इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए कि मैं तो हिंदी में सोचता हूँ फर्स्ट या सोचती हूँ फर्स्ट देन ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश में, मुझसे होता ही नहीं है. नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट अगर आपने सोचो लिखना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश में, बेशक आप एक लाइन लिख रहे हो, लाइक योर वीडियो वॉज कुछ भी करके लिख दो, नॉट जस्ट द गुड थिंग्स. इवन यू कैन राइट योर ओन रियल फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक. जस्ट बी कैंडिड मतलब ईमानदार रहो आप. तो बस अच्छा नहीं लगा वीडियो में साफ बोलो, मुंह पे बोलो कि नहीं अच्छा लगा. अगर सही लगा, ठीक ठीक लगा, आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाया, मैचअप कर पाया, प्लीज़ नोट इट डाउन, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन दैट शिवानी हमें ऐसे ही वीडियोस चाहिए. तो फ्रेंड्स डू सो. चलो आओ, आज तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी लाइक probably know this that how do we spend our weekend and how we can talk about our weekend. So before I'll start this topic, I'll get into this I would say discussion. I would like to know from your end friends, like what do you understand by weekend? What do you mean by weekends? Let me tell you. And if you want to give an answer, then please, the comment section, you know, is always open for you. You can go write your own answer and do let me know. So yeah friends, do tell me what do you understand by weekends. And this is our, I would say, chapter 1, where we'll understand the meaning of weekends.
Although now you would be like, why she's telling the simple mean of weekend. We all know this. Trust me, friends. Listen to me. Actually, there are a lot of people who doesn't even know what weekend means. They simply thinks that weekend means Sunday. Even I'm also one of them. Actually, I was one of them, but now I'm not. So yeah, friends, weekend means the end days of a week. The end days means Saturday or Sunday. So in a weekend, we don't have to work. Maybe we get a day off from our office, not from our housework. I'm not saying that thing, friends, to be honest with you. So yeah, from our office and sometimes even from school if it is second Saturday or something like that. So that time we can get off from our school also and office also. This is what meant by weekend off actually. मतलब जहाँ पे आपकी सैटरडे और संडे की छुट्टी है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो उसी को बोलते हैं वीकेंड डे, वीकेंड्स ऑफ. और अब नाउ बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट हाउ डू वी स्पेंड आवर वीकेंड्स, like how we can talk about our weekend plans in English. If we have, then only. Even if we don't have, so it simply you can say that I'll relax at my house and I'll drink some tea and I'll visit my parents house, meet my one of my friends. So you can also talk about like this. But if you have certain plans, how will you gonna talk about that? How will you articulate and deliver your own thoughts, and somebody will easily able to understand you. So yeah, friends, without wasting a further, let's hear this out. Listen to me actually, and if you already know the way how to express it, please do let me know in the comment section. I'm already eagerly waiting for your comments that okay, my friends are usually enjoying my videos. Although learners, you are not the learners for me. You are my friends, the YouTube community, I would say. You are a part of the YouTube channel, the YouTube family that I'm running, but the channel is yours. It's your own channel. It's not mine, it's your own channel, friends. Seriously, trust me. So yeah, let's talk about, I would say, a dialogue that I have. It's my own dialogue actually, not my own actually, the plan that I have for this weekend, for this upcoming Saturday and Sunday, for tomorrow or the day after tomorrow. Tomorrow means कल, और the day after tomorrow मतलब परसों के लिए. अगर आपको इंग्लिश में बोला है परसों, तो परसों वर्ड के लिए होता है the day after tomorrow. The day after tomorrow. Yeah, you heard it right. So चलो फ्रेंड्स देखते हैं. मैं पहले बताती हूँ कि मेरा हिंदी में क्या सिनेरियो रहने वाला है एक्चुअली सैटरडे संडे का. तो फ्रेंड्स सैटरडे और संडे को वैसे कुछ खास प्लान नहीं है, बट हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा सकती हूँ घूमने के लिए. ऑल्दो मैंने लास्ट टाइम भी सोचा था खाटू श्यामा टेम्पल जाने के लिए, बट सम हाउ आई गॉट मिस दैट चांस एंड आई मिस द बोट एक्चुअली. अब मिस द बोट मीन्स कि आपने अपॉर्चुनिटी खो दी, सो आई मिस्ड द बोट. ओके, so but still now I'm planning to to go out somewhere, and let us see, hopefully if things will work, we'll go out. Although it could be with my family, it could be with my friends, it could be now it's not a solo trip, friends, to be honest with you. Hey, just tell me one thing, do you like solo trips? Like, have you ever traveled completely or solely by yourself? If yes, do let me know in the comment section. So हाँ, चलो फ्रेंड्स, अब जैसे कभी बाहर जाने का है तो सही प्लान, पर देखते हैं क्या होने वाला है. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू वॉच अ मूवी, अ पर्टिकुलर मूवी, but I don't know like a good movie which movie I can watch. So do you have any movie in your mind? If yes, please let me know, friends. एंड हाँ, कुछ ऐसा घर का काम, आपको पता है फ्रेंड्स, वीडियो का डिसाइड करना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, किस चीज़ पे वीडियो बना सकते हैं. ऑल्दो मैं यूजुअली सैटरडे संडे मिस कर देती हूँ, बट दिस टाइम आई डोंट वांट टू मिस अ सैटरडे संडे. मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट सैटरडे को ना पाए, पर संडे संडे को ना पाए, बट सैटरडे को तो वीडियो आए. तो ये मैं सोच के चल रही हूँ. नाउ लेट अस सी हाउ थिंग्स विल टेक शेप. थिंग्स विल टेक शेप मीन्स कैसे चीज़ें होती है, मतलब होता है ना कैसे चीज़ें करवट लेती है. तो हाउ थिंग्स विल टेक शेप, ऐसे आप बोल सकते हो. ऑल्दो फ्रेंड्स, yeah, this is what my plans for weekend, and I would like to know from your end as well. Now let us translate it into English.
अभी तक तो मैंने हिंदी में बोल दिया, बट सपोज करो मुझे इंग्लिश में किसी को बताना है, एंड समटाइम्स मे बी इन द इंटरव्यू पीपल यूजुअली आस्क दिस दैट हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, what do you like doing on your weekends, and what's your weekend plan. तीनों क्वेश्चन सेम ही है, बट आंसर सॉरी तीनों क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंस है, बट आंसर एक ही है. हाँ, एक ही आंसर है फ्रेंड्स. क्या आप करते हो वीकेंड्स पे? आपको मूवी देखते हो, या आप लाइक किसी से मिलने जाते हो, फ्रेंड्स हैं आपके कोई, आपको घर में आराम करना पसंद है? क्योंकि मैं जानती हूँ फॉर आवर वर्किंग प्रोफेशनल, like they most of the time people usually want to take rest at their own house, and sometimes they usually wants to, like people want to actually spend time with their family, with their close ones, so it can I would say easily understandable. That is completely fine. I'm not saying that weekend plans means like we are going out in a club or we are doing party, but yeah, it means that also. But having said that, everyone has their own choices, so everyone has their own perspective, and it depends person to person as well. ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट अस सी. चलो मैं पार्ट थर्ड करती हूँ. पार्ट थर्ड में देखते हैं कि आप कैसे इंग्लिश में बता सकते हो. आप मेरा डायलॉग देखो कम्प्लीटली, देन यू विल व्हाट यू नीड टू डू दैट यू विल ऑल्सो इमिडिएट मी. इफ यू वांट टू इमिडिएट, यू कैन इमिडिएट. You can also tell me about your complete weekend plan if you want to tell me in the comment section. So see me friends, look at me, and then I'll wrap up this session, so I won't take much of your time, just 2 minutes, that's it. So देखो friends, you all know that my name is Shivani Gupta, and if I talk about my weekend plans for this, I would say Saturday, Sunday friends, actually I have 2 plans in my mind. Either I would take rest at my house, or I would say I could go for a movie as well. So let us see. It depends on the situation, it depends on the circumstances. If things will take shape in the right manner, we will go out for a movie. If things will not shape in a appropriate manner, then we'll stay at home and watch a movie together. And about food, actually friends, to be honest with you, I have certain plans in my mind. Let us see. If I would prepare, I would say actually I'm going to prepare idli sambar on this weekend. And tell me friends, what you are going to prepare on Saturday, Sunday on your weekend, and will it gonna be very special and extremely special for you? Or friends, we all know that usually I literally want to enjoy on my weekends. It by going out, by I would say going out in a temple also, like last time. I think, yeah, I remembered. I went to Jharkhand temple, actually, that is in Jaipur itself, and we went to Akshardham temple also. But the thing that happened, actually, it got closed by that time. Seriously, friend, I don't know somehow, but when we reached there, it was already closed, so we were not able to see it. But this time we'll see. If we will get a chance, we'll go out again and we'll gonna see it. So yeah, this is my plans for my weekends already. Although friends, you know, on weekends we have so many things running in our mind. We all need to do our work, and I'm going to do my work. I'll be shooting a YouTube video. I'm going to like maybe think about what topic I can come up with from now onwards, and how can I frame my entire lecture plan. And you know, this is not just a lecture, actually, you know friends, I'm also learning along with you. So for me also, it should be, actually not it could be, it should be an interesting and interactive lecture. So yeah, I'm working on that friends. Let us see if on this weekend I could get more time, and then I'm going to work on it. So you see friends, this is how I'm going to spend my weekend. Although I know it's not quite engaging and interesting, बट फॉर मी फ्रेंड्स, आई एम जस्ट अ एम्बीवर्ट पर्सन. एम्बीवर्ट मीन्स जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी होती है. इंट्रोवर्ट मतलब जो खुद में थोड़ा शाई टाइप है, थोड़ा रेटिसेंट है. रेटिसेंट मतलब चुप रहने वाला है, बात करना पसंद नहीं है. और अगर एक्सट्रोवर्ट है, जिसको खूब घुलना पसंद है, घुलना मिलना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है. एम्बीवर्ट पर्सन होते हैं जो मिक्सड है, इंट्रोवर्ट भी हैं थोड़े और एक्सट्रोवर्ट भी हैं, काइंड ऑफ मिक्स्ड पर्सनैलिटी है उनकी. सो आई एम वन ऑफ दैम फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट विद यू. अर्लियर आई वॉज कम्प्लीटली एन इंट्रोवर्ट पर्सन, but slowly and gradually I have transformed my personality and became an ambivert actually.
What kind of personality do you have, friends? Do let me know in the comment section actually. Are you an introvert or extrovert or ambivert? Please do let me know in the comment section. Although, do let me know about my plan, if it is interesting and did you find it helpful. If yes, please do let me know in the comment section and frame your sentences also from friends actually on the same topic. How are you going to spend your weekend? What are your plans for weekends? I'm waiting for your comments. I'm waiting for your, I would say, support and your feedback and your guidance as well. So yeah, keep practicing, friends, and enjoy your weekends. Hopefully you will gonna enjoy, and as much as with your friends, with your family, and do, I would say, like have fun, stay healthy, stay happy. So friends, this time I'm going to take a leave of you. I just hope that you have enjoyed the lecture. If yes, give it a like, share it, and subscribe to your own YouTube channel, friends. I'll see you with another one just like this one. Till then, friends, take care. Bye bye.